So I'm at this point in time, I'm in the NDMC area, and especially at the Minto Bridge. I'll just try and show you in the visuals over here the kind of security arrangements that have been put in place, making sure that no one is allowed to enter the NDMC area who does not have a valid pass or a valid ID proof. Remember, the restrictions that have been put in place very clearly states that the vehicular movement inside the NDMC area will not be allowed from 5 a.m. this morning till 12 a.m. on the 10th of on the intervening night of 10th and 11th. So yes, that is what is being implemented on the ground. Senior police officials are present on this spot. Each and every vehicle is being frisked. Each and every vehicle is being checked. The ID cards of each and every person is being checked, and if at all the ID cards are valid, if at all they belong to the medical profession, then only they are being allowed to go inside this NDMC area. No other vehicle whatsoever is being allowed. The TSRs, the auto rickshaws, the buses, none of them is being allowed to enter the NDMC area, and that is what is creating a bit of a trouble for the people who are trying to enter the NDMC area, because yes, there were a few people who had no idea that such restrictions might be put in place, but yes, since the restrictions have been imposed since this morning, there are a few people who are being forced to return back to their homes, and there is absolutely no entry that is being allowed at this point. However, the traffic restrictions are still very liberal when it comes to the bordering areas of the national capital and also here. But yes, within the next few hours, as the head of states would start moving, the movement of the head of states would start, we could expect these traffic restrictions to get even more stricter, even more tighter, and the people who are now being allowed might be stopped for a few minutes or for a few hours, just because the routes might be in place. So yes, the next few hours are going to be very, very important, and the people who are traveling towards the national capital, the message is very, very clear from the Delhi police, and that is what we at CNN News 18 would also like to appeal to the people, that if at all people are traveling towards the NDMC area, the best mode of travel is going to be through metro, and if at all people want to enter, they should have a proper ID card, they should have a proper permission pass that should be generated by the government of India, or the permission should be given by the DCP of this area. Then only they can be allowed to enter anywhere in the NDMC area, and that is what is happening. There still is a lot of confusion, there still is a lot of argument that is happening between the people in the vehicles and the police who is trying to control this crowd over here. So yes, this is the situation that is going to stay over here over the next two days till the G20 Summit comes to an end. But yes, the kind of security arrangements that have been made over here, this is definitely something very, very unprecedented. We haven't seen such security arrangements even on celebrations of 15th August and 26th January as well. But yes, this time around, the security arrangements are even more tighter. The instructions are clear, and the only people with the requisite passes and the valid ID proofs, they are being allowed to enter the NDMC area. दिल्ली में हो रही G20 की बैठक को लेकर के गुरुग्राम और दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर के भी प्लान तैयार किया है, और इसमें कई जगह डायवर्जन दिए गए हैं। आज जो है NH48 के ऊपर भारी वाहनों की आवाजाही बंद है। इसके साथ साथ जितने भी जो हल्के भी कमर्शियल वाहन है उनकी भी आवाजाही बंद की गई है। इसके अलावा जो एक तरह से सर्विस रोड के ऊपर जो कट्स हैं उनको बंद किया गया है। NH48 के जरिए जो एयरपोर्ट की एंट्री है उसको भी बंद किया गया है। अब गुरुग्राम से जो एयरपोर्ट जाना चाहता है वो उन्हें कापासेड़ा होते हुए सर्विस रोड के जरिए ही एक तरह से एयरपोर्ट पर जाना होगा। बाकी रास्तों से एंट्री बंद की गई है। इस वक्त आप बॉर्डर पर देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के अलावा जो BSF और ITBP के जो जवान है वो सुरक्षा में लगे हैं, गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा ये तय कर रहे हैं कि कोई भी कमर्शियल वाहन जो है वो इस रास्ते के जरिए ना जाए। एक तरह से गुरुग्राम से जो भी लोग खासतौर से दिल्ली जाना चाहते हैं उन्हें या तो मेट्रो के जरिए जाना होगा, या फिर अगर वो बस से जाना चाहते हैं तो उन्हें MG रोड होते हुए जाना होगा। NH48 की तरफ से कोई भी एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो सर्विस रोड है उसको बंद किया गया है। गुरुग्राम से ओल्ड दिल्ली रोड जिसे कहा जाता है, यानी कि कापासेड़ा रोड जिसे कहा जाता है, उस रोड के जरिए जो है वो दिल्ली के लिए एंट्री है, MG रोड के जरिए एंट्री है, मेट्रो के जरिए एंट्री है। लेकिन NH48 के ऊपर अगर आप आ रहे हैं तो आपको कहीं भी जो बीच में जो सर्विस रोड के ऊपर जो कट है उनके ऊपर आपको जाने की अनुमति नहीं होगी। सीधे गुरुग्राम से आप सीधे दिल्ली के ऊपर जाएंगे, और एयरपोर्ट खासतौर से आप इस रास्ते के जरिए नहीं जा पाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से अब जो है चाक चौबंद यहाँ पर किया गया है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, और साथ में ये तय किया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी जिनको जाने की अनुमति नहीं है उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ पर कॉमर्शियल जो गाड़ियाँ हैं छोटी, उनमें भी उन्हीं कार को जाने की अनुमति है जिनके पास वैलिड पास है, या फिर उनको अनुमति जिन्होंने ली हुई है उन्हीं को जाने की अनुमति दी गई है।
फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से काफी सुरक्षा कड़ी की गई है और यहाँ पर यह तय किया गया है कि कोई भी कॉमर्शियल वाहन हो या फिर बस हो या फिर कॉमर्शियल जो छोटी गाड़ियां हैं उनको ना जाने दिया जाए। पूरी तरह से सर्विस रोड को भी बंद कर दिया गया है।